मैं तो सिर्फ नीदरलैंड की बात करूँ। Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके लिए बहुत से हमारे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज प्लेस हुई हैं, स्पेशली यूरोप साइड के से रिलेटेड डेली बेसिस पर हमारे पास इंक्वायरीज प्लेस हो रही थी और स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे यूरोप साइड के बारे में, स्पेशली नैदरलैंड्स के बारे में, स्वीडन के बारे में। स्पेशल जो आज हमारी डिस्कशन होने जा रही है वो एम्स्टरडैम पर होने जा रही है, जिसके लिए आपकी जो भी क्यूरीज है रिलेटेड आइल्स, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आप अपनी क्यूरीज को लाइव क्लियर कर सकते हैं, हमसे इन कांटेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी लिंक दिया जाएगा, उसको कनेक्ट करें और हमसे लाइव डिस्कस करें अपनी क्यूरीज को। तो आज हमने इस पर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है रिप्रेजेंटेटिव है एम्स्टरडैम की मिस साले। थैंक यू सो मच दैट यू जॉइन अस टुडे, स्पेशली रियली थैंक यू। एंड इसी के साथ हमने इनवाइट किया मिस्टर उमैर मजहर को, जो कि हमारे HR कंसल्टेंट के ऑफिसर हैं, और उन्हीं के साथ मिस्टर नुमान है और मिस्टर उस्मान दस्तगीर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे। Thank you very much. Now over to you, Mr. Numan. You can ask the questions. Sally, I think you are going to give the presentation first of all, and then we have students in this session as well, who joined as well. So we will check the presentation first, and then they will answer the question. They will question you regarding the University of Amsterdam and University of Amsterdam Applied Sciences. Over to you. Hello, everybody. So I'm just going to speak for maybe 10 or 15 minutes and give you a little bit of information today about the courses that we have on offer in Amsterdam. And I thought I'd start by explaining to you the differences between a research university and an applied science university, and then move on to talk a little bit about what on-campus can offer, and then finally look at maybe why you'd want to choose the University of Amsterdam, or why do you want to choose the Applied Sciences University? And then I think probably lots of questions will come up, but I might just talk to you a little bit about what's going on in the centre right now and what we're doing in September, given the COVID-19 situation. Okay, so the first thing to talk about are research universities and what you should expect from going to a research university. So the classes are mainly theoretical, and there's really very little practical content. So students are expected to obtain critical and analytical skills and use them to conduct research in a specific field. There are minimal contact hours, so you probably won't have more than maybe 6 or 8 hours of classes in the week. And the rest of the time you're expected to work independently. So there's a significant amount of preparation and a significant amount of independent study that students have to undertake. These degrees normally take 3 years to complete, and pretty much none of them have any kind of integrated internship. So if a student was interested in having an internship, they would have to add that at the end of their degree program. And for most students who go through a research university, they're being prepared for an academic, a research, or perhaps a professional role. And almost all students will go on from an undergraduate degree to take a master's degree. Okay, for applied sciences, so we work with Amsterdam University of Applied Sciences. It's a much more hands-on experience, and it's very much designed to get students ahead at the beginning of their professional life. The emphasis of the courses is very much on obtaining skills and knowledge that can be used at work immediately. There are lots more contact hours and lots more learning through doing projects. It's normally a 4-year degree, but it almost always includes an integrated internship. So we find, generally speaking, that a 4-year degree will have around about 18 months of integrated internships in there. And they're most definitely the best types of degree to get if you're looking to be prepared properly for the job market. Okay, so that's the degree programs that we're sending students to study on. Now a little look at what we're actually offering at our own foundation program. So we work with the University of Amsterdam, and we prepare students for bachelor degree programs in economics and business economics, business administration, econometrics and operations research, and actuarial science. That's the first group of subjects.
We've also started working with the BSc in data science, and we work with the PPLE department, that's politics, psychology, law and economics. Our programs are 3 terms in duration, so you start in September or you start in January. We'd normally ask for a minimum age of 17 to join our programs, and it's around about 26 hours of tuition per week, and that might be face-to-face at the moment, that might be online, some of that might be guided study, but there's about 26 hours each week of study with your tutor. We also have a master's qualifying program at the University of Amsterdam, and we're working with various different degree programs within the School of Business. So you can see there the list of degree programs that we have progression onto. Again, it's a 3-term program, but there's only a September start. We're looking for about a minimum age of about 21, and again, it's around about 26 hours of study per week. Now, where this course is unique is that it's a program that is run jointly with the University of Amsterdam. So students typically will take an English language program with us, and they'll take a research project program with us, and everything else is taught by the university. So students join, bachelor level students at the university, and take a selection of courses that helps to prepare them for that master's degree program. The students find it tremendously exciting because they're being taught by university professors, they're taking university level exams, and of course when they finish our program they get the certificate from on campus, but they also get a transcript of their transferable credits. So in fact students can use those credits to go and study at other universities if they want to. It's quite a unique program, and we're just about to start our 3rd year of this program, and we'll have about 70 students joining us for this program in September. Okay, we also work with the University of Applied Sciences, I mentioned earlier, and we have, it's a very simple offering there. We offer the Fast Track Business Program, which is a 3-year program, and we offer a 4-year business program. So the 4-year business program would be the program that has the integrated internship in it. And again, it's a 3-term program. You can start in September or January. Minimum age is 17, and it's around about 26 hours per week. Cool. So, a couple more slides I've got here. Why would you choose to come to the University of Amsterdam? It's a fairly easy answer. It's fairly easy to give an answer to that question. It's a world top 60 university. So you really are coming to one of the best universities in the world. It's a modern university with quite modern facilities, but it has a rich history. They've been teaching in Amsterdam at university level for hundreds of years, and they really do like to think that they are able to look back and take all that experience from those hundreds of years of teaching, but they look into the future, and they're always constantly striving to be more modern. The teaching faculty, so the people who will be teaching your students, are world class. That's what you get if you're at the top of the university leagues. It's very much research led. Okay, so for a student who has a true interest in their subject and is happy to research for themselves, it's the place to come and study. There are around about 5,000 international students from around about 100 different nationalities. So again, it's a very international feeling university. The majority of courses are taught in English, certainly at master's level, and certainly students would, generally speaking, use English around the campus. And finally, it's located in central Amsterdam, which is a beautiful city. I don't know if any of you visited there, but it really is a lovely place, and it's quite a small city as well. So the university itself feels very much part of Amsterdam. Possibly a little bit more difficult to answer the question, why choose AUAS? The first thing to say here is that 80% of their graduates have employment within 6 months of graduating, which is a hugely impressive statistic. And so again, if you have students, or you are a student who really is looking to study then work, this is the place for you to go, because you're pretty much guaranteed that you'll have proper work within 6 months of finishing one of their programs. Again, it's really international, about 80 nationalities of students represented in their classrooms. It's a proper internationally recognised and accredited degree that you get from ANSIB. They have excellent facilities. They're right in the business district of Amsterdam. But there's also an element of support that perhaps students at a research university won't necessarily get. So they all get a mentor and a tutor from day one. They're all helped to choose the right types of electives
so that will suit their interests and their capabilities, and at the same time to boost their employability. Okay, so a little bit about the programs that we're running in Amsterdam, but of course, you know, the current situation is a strange one. I'm presenting here from my home, which is unusual. But what are we doing on campus, and how is it working in the Netherlands? So at the moment in the Netherlands, you may have read that the cases are going up at the moment, but those cases are mainly amongst younger people, and so hospitalizations are not going up at the same rate. There's a huge focus at the moment on social distancing. So we've been told that the country has been told that we have to maintain 1.5 meters separation from other people. They're also in the bars and the restaurants. They are open. Places are open for business, but they are making sure that they take people's contact details so they can contact trace if there are cases reported. And of course, it's very easy to get a test here. Anybody who even has mild symptoms can go along and be tested and find out very quickly if they have the disease or not. Schools, colleges, and universities are all open. They're all going to be opening as normal in August, but as with on campus, there will be a blend of face-to-face and online learning for all students. This is to allow us to get the students into the buildings and into the classrooms safely. So of course, if you in a previous world had a classroom that seated 40 people, if you start to put 1.5 meters between all of those people, then you have to cut the capacity down. So what we're doing and what the university is doing as well is we are giving students a blend of face-to-face and online learning, certainly for term 1, probably for term 2 as well. So that also means that if a student can't arrive in the Netherlands because they don't feel safe to do so, or they're not allowed to fly, they can still follow one of our programs. And this will be the same for students who are joining us in January. So we're really saying arrive when you can, that we are absolutely open, but we're taking safety very serious. It's all about safety first. So how do we support our students, and how do we give you all support when you're with us? So some regular updates. If we can't see students face to face, then we give them regular updates by email. We also have a daily reception hour, and that daily reception desk hour is done face to face if we're in the centre, but it's done online if we can't be in the centre. The students have an hour where they can contact the admin staff and ask the normal kind of questions that they would be asking. We also have a welfare hour as well. So our head of welfare is on hand for an hour each day just to make sure that students can ask questions if they need to. She also runs stress release hours and lots of extra workshops on how to deal with stress, how to study from home effectively. We've put in place buddy systems so that students can work together. So they can't necessarily sit in the same room as each other, but they can get together again online and help each other through those difficult subjects. English and maths are often the most challenging subjects for our students. And of course, we've put in place at the moment extra checks for any of the under 18s that we have to make sure that we're keeping in daily contact with them to make sure that they feel safe and secure wherever they are in the world. And that was my very, very quick walk through our offering at Amsterdam at the moment. I'm sure there are lots of questions though. I'm going to stop sharing. Many thanks for your presentation. I have a question to ask from you regarding the eligibility of foundation. What percentage for HSC is required for your foundation program, and what grades are required for the A-level students? Sorry, say again? I'm saying, what is the eligibility requirement for your foundation programs for HSC and A-levels? Yeah, exactly. So you have to pass your, I believe you have to pass your HSC with 60%. Is that correct? Yeah, okay. And then for A-levels, it depends on the subjects that you are doing. But effectively at the moment, we need to ask students to have 3 A-levels. And then there's quite a complex structure of whether the A-level is business-based or science-based or one of the core curriculum subjects. But I can send out some more information about that. But we're really looking for 3 passes at A-level. Probably 2 of them would have to be A to C. Okay, fine. Yeah. Okay. What is the IELTS requirement for the foundation program? Like if the student has done A-levels and he has done O-levels as well, and English B, A, B or C grade. So what is the requirement for, is it the requirement of IELTS for them as well? Depends on the subject they've done at A-level or O-level. So if they have got I think if they've got a GCSE English grade B, then they are exempt an IELTS certificate. But we do have to review all of these things every year with the university and the immigration services. So it's always best to check to make sure that there hasn't been an update.
For IELTS requirements, there are different requirements for the different programs that we have. Okay, so your standard business program starting in September, the student will need a 5.0 in IELTS and no more than one band below 5.0. Okay. If the students want to start the PPLE program or the social sciences program, they need to have a 5.5 for starting in September. Okay. For starting in January, students need to have a 5.5 if they want to start the business program. Okay, just a little bit higher than it would be for the September starters. And for the master's programs, it's all a 6.0. They must have a 6.0 to start with us. In Noman sir, we have inquiries from students, and he's waiting. Now I'm taking an inquiry from Mohammed Irfan Alvi. जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, आवाज आ रही है आपको? जी इरफान, आवाज आ रही है आपको? नेक्स्ट इंक्वायरी ले लेते हैं हम अली रजा जी। अस्सलाम वालेकुम अली, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? Walaikum salam. Yes sir, I can hear you. Can you hear me? Yes, I'm listening to you. Can you switch your yes sir. Yes sir. Hello. Yes. What's your question? Can you switch your camera? Sure sir. Just a minute. Sir, now recently I was graduated from university in 2019 October, but due to COVID-19 I have not done my IELTS. So sir, it is possible, any possibility to get admission in masters without IELTS or with IELTS in university? Hello there. It really isn't possible to be admitted without having an IELTS certificate. I know the situation at the moment is difficult, but also our deadlines for entry for this particular academic year have passed now. So unless you're holding an offer from us or a certificate of enrolment from us, then you'd be waiting to apply for next year, and we would hope that you'd be able to take an IELTS before then. Okay. So we cannot accept student without IELTS. Probably not. We'd have to look on a very much. I mean, at the moment with the situation with COVID-19 and test centres closing, we're very sympathetic, of course, the difficulty that students have had to book tests. But there are various other options. But we'd have to look at the whole application and probably ask the university for their permission to take an application further if we had to. But in a general speaking, in a normal year, we'd certainly have to ask for an IELTS certificate. I think many of the universities are accepting Duolingo because IELTS is not available. So yeah, I know. Unfortunately, accepting that as well. Yeah, unfortunately, Amsterdam have said no to Duolingo. So they're accepting TOEFL from home. That's the only non-test center based exam that they're going to be accepting at the moment. Okay, fine. Do you have any scholarship? Sorry, do you have any scholarship for Pakistani students? I'd have to ask my esteemed colleagues on campus, the on-campus sales team, to answer that question. I know that they do have scholarships from time to time, and we are working on a large-scale scholarship program. But at the moment, I don't hold any scholarships within the centre. Hi, I'll just add to that answer as well. We do usually have scholarships, but as Sally has mentioned that for this current year, since the deadlines have passed, as soon as we do get further information on the next intake, we will definitely be having some sort of scholarships, but usually the benchmark is about 2,000 euros. Yeah. Yes, अली आपका कोई सवाल है इसके अलावा? जी अली, इसके अलावा कोई सवाल करना चाहेंगे आप? No sir, thank you so much. ठीक है, बस ये कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह रिटन हो तो काइंडली वो भी सेंड कर दें। श्योर, मैं इंशाल्लाह अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पर, अपने तमाम व्यूवर्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, इनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा। अगर यहाँ पर आप समझते हैं किसी वजह से कोई क्यूरी मिसप्लेस हो गया या नहीं अंडरस्टैंड कर सके आप, तो आप मिस्टर नोमान से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर नोमान का नंबर है 034647470334 पर एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे HR हेड ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। नंबर रिपीट मैं फिर से एक दफ़ा करूँ, 034647470334 पर आपकी जो भी क्यूरीज हैं, अगर आप समझते हैं यहाँ पर कोई क्यूरीज आपकी मिसअंडरस्टैंड हो चुकी हैं या नहीं क्लियर हुई, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अली, आपने हमें ज्वाइन किया।
सर काइंडली एक दफा प्लीज दोबारा रिपीट कर दें नंबर 034647474034 आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है मिस्टर नुमान का। जी सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। Okay, Sally, we have a question here. Yes, What Mr. Numan, what is the difference? sorry to cut you. I'm taking next inquiry. Okay. जी अस्सलाम वालेकुम सैयद अली, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। सर जस्ट अ मिनट सर एक मिनट जस्ट अ मिनट श्योर श्योर। साथ अपना सवाल बताइए। व्हाट्स योर क्वेश्चन विद मिस सॉले? सर वैसे मैं क्वेश्चंस आगे कर चुका हूँ अपने और आंसर भी ले लिया मैंने तो यहाँ हमारी क्या वो भी है, आप किसी और को देख लें। फरहाद अवेलेबल है, अफनान अवेलेबल है। जी अस्सलाम वालेकुम फरहाद अली, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम फरहाद, आवाज़ आ रही है आपको फरहाद? अपना जो हमारे साथ कनेक्ट है वो काइंडली अपना माइक ऑन कर लें ताकि हमें आवाज़ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट इंक्वायरी की तरफ चलते हैं। हेलो सॉरी सर माइक्रोफोन जो है ना वो ऑफ था, आई एम रियली सॉरी। जी जी कोई ऐसा इशू नहीं है। बताइए फरहाद कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक ठाक हूँ। व्हाट्स योर क्वेश्चन विद मिस सॉले? अच्छा सर मैंने ये सेमिनार थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो आई डोंट नो कि ये वेदर इट इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया और यूके। जी बेसिकली जी जी सॉरी कैन यू हेयर जी मी? मिस्टर नुमान, यस आई एम लिसनिंग टू यू। मिस्टर नुमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ फरहाद, ये जो अभी सेशन हो रहा है ये बेसिकली हॉलैंड के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम अप्लाइड साइंसेज के लिए। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं ताकि हम आपको गाइड कर सकें। अच्छा सर सही है, ठीक है सही है। सर मैंने बैचलर की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ जी, और 2018 में किया था। इसके बाद मैं जॉब कर रहा था तकरीबन कोविड-19 के जो लॉकडाउन से पहले। तो अभी घर पे हूँ। लाहौर में था, एक रेडिएटर की फैक्ट्री थी और पीटीई किया है। उसमें तकरीबन 64 स्कोर है मेरा। 6.5 बनते हैं आइट्स के इक्विवेलेंट। तो उस्मान साहब हमारे पास कोई ऐसा रेलेवेंट कोर्स है इनके लिए? मेरे हिसाब से तो इनके पास हमारे पास कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो हम इनको यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में ऑफर कर सकें। एम्स्टरडेम के लिए नहीं, दिस वी डोंट हैव दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन। लेकिन आप इनको यूके के लिए डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके लिए, और यूके के लिए करंटली हमारी स्कॉलरशिप्स भी चल रही हैं। तो वो आई एम श्योर कि योर टीम, आप इनको कह दें कि ये डिटेल्स आपके पास छोड़ दें, एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन गेट टू अस विद द एप्लीकेशंस। जी जी बिल्कुल। अच्छा फरहाद, ऐसा है कि अभी जैसा कि आपने सुना है मिस्टर उस्मान ने आपको बताया भी है कि आप जो है रिलेटेड इससे इंफॉर्मेशन है अभी रिसेंटली जो है स्पेशली हमारे एम्स्टर्डम में आपके लिए कोई कोर्स ऐसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूके में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी और ऑप्शन मिल जाएगी। तो आप ये अपनी डिटेल्स हमें मैसेज कर दें 03464747 034 पर। मैं नंबर रिपीट करूँ, आपकी स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहे हैं। 03464747 034 पर अपनी डिटेल्स को व्हाट्सएप कर दें अपने नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी के साथ। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह रिलेटेड यूके प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू नेक्स्ट सो इंक्वायरी मच। की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सताइश, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Yeah, what's your question with Miss Soleh? You can ask the I question. wanted to ask you about UK software engineering degree. Okay. So I just wanted to ask about the scholarships available and the grade requirements of the universities for A levels. I'm afraid we don't have any software engineering degrees in Amsterdam.
So that would be something that maybe you would look to the UK, one of our UK centres, to go and study a subject like that at. But it's not something that we offer in Amsterdam at the moment. बेसिकली जो सेशन हो रहा है ना ये एम्स्टर्डम के लिए हो रहा है। अगर आप यूके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी डिटेल्स जो है हमारे ताहिर साहब हैं इनको डिटेल्स अपनी सेंड कर दें तो आपको कांटेक्ट करके वो यूके की इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे पास आप काफी ऑप्शंस हैं इसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं और यूके में एडमिशन भी करवा के देते हैं आपके ताहिर साहब। ओके, सो एचआर कंसल्टेंट की मैंने पूछना था, जनरल क्वेश्चन है कि अगर आप लोग जो है सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फिर वीज़ा वगैरह में हेल्प करते हैं तो उसकी आप लोगों की कॉस्ट क्या होती है? इसमें जो है हमारे जो ओवरऑल हमारे जो चार्जेस होंगे केस वो 22,500 है। इसमें हम ओवरऑल आपका केस प्रोसेस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग A to Z आपका केस प्रोसेस होता है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू भी होता है इसमें, ठीक है। प्रिपरेशन थोड़ा सॉरी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सताइश, यहाँ पे एचआर कंसल्टेंट्स के एडमिशन के कोई भी चार्जेस नहीं होते। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आपका एडमिशन प्रोसेस कर देंगे। और जो भी एचआर कंसल्टेंसी इन्वॉल्व होती है वो होती है जिससे हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे होते हैं। फॉर एडमिशन हमारे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो सारी उसमें 22,500 कॉस्ट है। तो उससे हम आपसे 20,500 ले रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो और मच। बाकी जितनी भी फीस इन्वॉल्व होती है किसी भी यूनिवर्सिटी को जो आपने पे करनी होती है उसमें कोई भी एचआर कंसल्टेंट्स का कोई नहीं होता। आपने डायरेक्टली उनको यूनिवर्सिटी को खुद सेंड करनी होती है पेमेंट्स बैंक के थ्रू, और हमें सिर्फ आपने उनकी रिसीट की कॉपी प्रोवाइड करनी होती है जो हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं। तो इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर दें और एडमिशन प्रोसेस की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप हमें से तीनों में से किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें अपने, और जिस भी कंट्री और कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं मेंशन कर दें तो हम आपको प्रॉपर्ली सेशन के बाद कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। सताइश आपकी स्क्रीन पर नंबर्स शो हो रहे हैं तो आप तीनों नंबर्स में से किसी पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स फौरन से व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आफ्टर लाइव सेशन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर इंक्वायरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। Sally, what are the intakes we have for foundation program? Well, intakes? Yes, intakes. What are the class starting dates? Okay, sure. So we're starting this September. In fact, we're starting with our master's students on the 24th of August for induction week. And they start their classes on the 29th of August. And then for our UFA students, the students at the University of Amsterdam, we're starting on the 14th of September, and then starting classes on the 21st of September. And then for the applied science students, they're starting on the 21st of September with classes starting on the 28th of September. And then in January, it's I think it's the 5th or the 6th of January we'll be starting. Sally, a most common question from Pakistani students, like what are the post-study work opportunities for international students in Amsterdam? A lot of students do stay and work for a year, so there's something called there's a visa that students can apply for, and that visa will allow them to stay for 12 months after graduation and allow them to have free access to the work market. And those visas are very popular amongst students. And of course, if in that 12 months that you take the visa, if you get employment at that point, then you will be able to extend your visa for the time of the employment that you've got. Those visas are most definitely for university graduate level employment. Okay, they're not for people who want to come in and work in a bar or a restaurant. Okay, so there's a minimum salary requirement, which is about €29,000 per year, which would be about what is a standard graduate salary. We say to the students that it's possible to get work in Amsterdam. A lot of students end up doing an internship first. It's very popular in the Netherlands to go and do a very low paid internship for a company, and then that internship will often change into the offer of work if the person has been particularly impressive. Okay, thank you. Usman bhai, we want to ask the question regarding visa as well. So can you please guide us on the visa from Pakistani students? Sorry, Numan साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो वीजा अप्लाई करते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक बैंक स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान से। हम लोग स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं एम्स्टर्डम के लिए जो बेसिकली चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ वीजा। तो बेसिकली तो देखिए रिक्वायरमेंट्स ही होती है कि वंस आपने अगर एडमिशन अपना सिक्योर कर ली है
तो इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट इज दी ओनली पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। आपका आईएलटीएस का टेस्ट होना चाहिए, साथ बैंक स्टेटमेंट आपकी जरूरी होती है जिसमें आपके साथ वो सारे के सारे फंड शो हो रहे हैं कि जी यू विल बी एबल टू सस्टेन। देयर इज नो पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप हमें ये भी बता दें कि जो बैंक स्टेटमेंट है हमने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, जो कि फीस के जी साथ पे करनी होती है। लाइक हमारी फीस बिल्कुल। एमस्टरडैम की फाउंडेशन की फीस 13,000 यूरोज है, तो हमने कितनी अमाउंट एज अ सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करनी होती है लाइक बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में? सर जो तो जहाँ तक ट्यूशन फीस का ताल्लुक है, ट्यूशन फीस आपको सारी की सारी पे करनी पड़ेगी। आपने जो बाकी बैंक स्टेटमेंट में अपने दिखाने वो आपने मेंटेनेंस चार्जेस दिखाने होते हैं, लेकिन ट्यूशन फी 100% पहले क्लियर होगी व्हेन अप्लाइंग फॉर द वीजा। और वीजा रेशो की अगर बात की जाए तो वीजा रेशो क्या है? सर एग्जैक्ट एम्स्टरडम का नहीं है, ऑन कैंपस का, लेकिन ओवरऑल जो वीजा रेशियो है दैट इज यूजुअली वेरी गुड। ठीक है, हमारी रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं। अगेन इसमें दी ओनली मैसेज वी यूजुअली गेट अक्रॉस इज कि जहाँ तक एप्लीकेशन का ताल्लुक है, एप्लीकेशन से लेके जो वीजा एप्लीकेशन है उसमें भी व्हाट वी जस्ट रिक्वायर इज देयर नीड्स टू बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस होती हैं नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ यूरोप, बाकी मुल्कों के लिहाज से भी द बिगेस्ट इशू इज कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस जो आपने दिखाने होते हैं उसमें कोई एरर्स होते हैं। यहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी होती है वो इनकम्प्लीट अगर आप फॉर्म जमा कराएंगे, कई दफा इट्स वेरी स्मॉल मिस्टेक्स एज वेल, कि मतलब आपने जो कॉपीज अटैच करनी है, आपने अगर पिक्चर्स वगैरह अटैच करनी है, स्मॉल थिंग्स एज वेल, बट द बिगेस्ट थिंग इज एज लॉन्ग एज आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वीजा प्रोसेसिंग में आपको यूजुअली कोई इशू बहुत कम हम फेस करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ताहिर अपने व्यूअर्स को पूछने जी बिल्कुल। नुमान साहब एक इंक्वायरी है जी। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज़ जी सर। उमर, आई हैव डन। हेलो जी जी बताइए क्या क्यूरी है आपकी? सर, आई हैव डन एफएससी प्री मेडिकल इन 2020 with ठीक है। securing about 75% marks. So I'm mainly looking for MBBS or any other medical course. So if you are offering any medical course, mainly MBBS, so can you please tell me requirements? Sure, we don't. I mean, we don't have a pre-medical course in Amsterdam, but I know that my colleagues in the UK, UCLan, run a medics course, and again, possibly Usman will be able to help with some questions to answer to that question in particular. Exactly. I'd just like to add that, as Sally has mentioned, we don't have any medical courses available in Amsterdam. In fact, even in Europe. But we do have the Medicine Foundation for on-campus UK North, which is based in UCLan. And if you'd like further information about that, I'm sure you can get in touch with the HR team and they'll forward your application to us for that. Yeah, it's a really good course as well. I've read a lot of good things about that program. So, yeah. I have another question. Sure. जी पूछिए। Sir, my father is in UK on resident permit. So is there any negative impact if I apply for student visa of UK for visa grantation? Sorry, Umar, can you please ask your question again? सर उमर का सवाल ये है कि उनके फादर यूके में है और वो अप्लाई अगर करते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए, वीजा रिलेटेड मैटर्स से मैं बस इतना ही कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी तरफ से कोशिश ये होती है, अगेन एज आई मेंशन्ड अ व्हाइल बैक, हमने अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट रहना है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हाइडिंग एनी डिटेल्स, ठीक है, एंड वी हैव एक्चुअली shown whatever is the ground reality. As long as we're covering that and we're disclosing all of these factors, it's again, visa at the end of the day is based on the discretion of the UK VI officer who's going to be interviewing you. If your interview is done well, if you've disclosed these facts, it's really difficult for me to say definitively कि जी आपका impact होगा या नहीं होगा, लेकिन मतलब अगर उनका आपके फादर का वहाँ वीजा है भी, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी की कंफर्म्ड ऑफर है, आपने उनकी फीस पे कर दी है, आपने वीजा अप्लाई किया, जो उनको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपका वीजा असेस करेंगे,
बट उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं नहीं, अगेन वो वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि हम आपको एक गारंटी दे सकें कि जी नहीं होता, बिकॉज वो तो जस्ट लाइक यू एनीबडी हु अप्लाइज फॉर द वीजा फॉर द यूके या एनी अदर कंट्री, वो डिस्क्रिप्शन होती है वीजा ऑफिसर की कि वो उसमें कोई इशू क्रिएट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू। उमर, आप ऐसा कीजिए, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, और मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है नुमान साहब का और ताहिर का, और आप हमें उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें, और फिर हम आपको डॉक्यूमेंट सेस करके आपको फिर ऑप्शंस बता सकते हैं, आपसे पूछ के कि आपके फादर की सिटी में और आप कहाँ पे जाके पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर हम आपको उसमें डिटेल हेल्प कर देंगे। जी सर, मैंने नंबर नोट कर लिया और आई ट्राई टू आपको मैं सेंड कर दूंगा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा प्राइवेटली। So nice of you, Umar. So nice of you, Umar. Thanks for joining us. जी नुमान साहब। Sally, I think we have asked everything. We have get information regarding application system, entry requirements, intakes, and visa assistance has been provided by Mr. Smart. Thank you so much for your information. Thank you so much for your time. Special thanks from HR team, and hopefully we will send you some information as well regarding the University of Amsterdam. I genuinely hope so. Thank you very much for having me. Bye, everybody. Thanks, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड नुमान साहब, आपको मैं बस यही लास्ट में ऐड ही करना ये चाहूंगा कि होपफुली वी हैव आंसर्ड most of your questions, but again on ground in Pakistan, me myself, my colleague Talal and Ma'am Javeria, we're here to assist you guys for any queries you have, and if it's related to particularly the center, Sally is always more than happy to help out in any queries. So just forward those to us and we'll definitely get back to you. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Thanks to all of you. Thanks, Ms. Saleh, for your precious time. Mr. Usman, for your precious time. Mr. Noman and Mr. Mal, to all of you that it was very good session today. And मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपकी जो भी क्यूरीज है आप अपनी लाइव क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जिस तरह के हमारा सेशन आज यहाँ पर एंड होने जा रहा है, तो आपकी जो भी क्यूरीज है, आपकी कोई भी क्यूरीज मिस हो चुकी हैं, तो वो नुमान साहब से डिस्कस कर सकते हैं। 03464747 034 पर नुमान साहब हमारे HR हेड ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। अगर आप इनसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी विजिट करें, स्पेशली एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो हमारा आज का सेशन रहा। तो आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज है नुमान साहब से आप एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी क्यूरीज जो हमारे यूके से रिलेटेड प्लेस्ड हुई हैं, उनको भी मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03464747 पर। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, एनालिसिस करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपकी क्यूरीज है आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे, और अपने तमाम व्यूवर्स का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आपको ऐसे ही HR फैसिलिटेट करता रहेगा कमिंग सेशंस में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bye-bye. Thank you.